हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श नॉलेज। आज आम हिस्ट्री यूनिट 7 रे थिबा ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1857 टू 1905 रो MCQ करिबा। एहार पार्ट 1 भिडियोटी पूर्व दिया जाइछि। एहाकु देखिबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब करी प्लेलिस्ट जाई देखि परिबे। आज रो क्वेश्चन स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन 101 Consider the following acts. 1 रे अछि पिट्स इंडिया एक्ट, 2 रे अछि द चार्टर एक्ट, 3 रे अछि द रेगुलेटिंग एक्ट, 4 रे अछि इंडियन काउंसिल्स एक्ट. What is the correct chronological sequence of these acts? Option A रे अछि 3 1 2 4, ऑप्शन B रे अछि 4 1 2 3, ऑप्शन C रे अछि 3 2 1 4, ऑप्शन D रे अछि 1 4 2 3. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन A 3 1 2 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 102 with reference to the colonial rule of India, which one of the following was not the feature of subsidiary alliance system? Option A रे अछि a subsidiary British army was to be maintained in the Indian state. Option B रे अछि the determination of expenses incurred on the subsidiary British army was the duty of Indian state. Option C रे अछि the Indian state had to keep a British resident in her capital. Option D रे अछि Indian soldiers could be used by the company commanders. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी Indian soldiers could be used by the company commanders. Next question 103 A public works department was set up in India by dash. Option A रे अछि लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डेलहाउसी, वारेन हेस्टिंग. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 104 The British rulers introduced a new system of education in India chiefly because they wanted to. Option A रे अछि provide a class of office workers for company. B रे अछि create an awareness of scientific and technical developments. Option C रे अछि promote the work of Christian missionaries. Option D रे अछि generate the capacity for self government. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए provide a class of office workers for company. Next question 105 Consider the following events relating to education. 1 रे अछि सर्जेंट स्कीम, 2 रे अछि यूनिवर्सिटीज एक्ट, 3 रे अछि वुड्स डिस्पैच, 4 रे अछि हंटर कमीशन. The correct chronological sequence of these events is ऑप्शन ए रे अछि 3 4 1 2, ऑप्शन बी रे अछि 4 3 1 2, ऑप्शन सी रे अछि 4 3 1 2, ऑप्शन डी रे अछि 4 3 2 1. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी 4 3 2 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 106 What is the chronological order in which the following appeared on the administrative skin of India? 1 रे अछि लॉर्ड आक्युलैंड, 2 रे अछि लॉर्ड एलिनबरफ, सर चार्ल्स मेटकैफ, लॉर्ड हार्डिंग्स. ऑप्शन ए रे अछि 1 3 2 4, ऑप्शन बी रे अछि 3 1 2 4, ऑप्शन सी रे अछि 2 1 4 3, ऑप्शन डी रे अछि 4 3 1 2. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी 4 3 1 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 107 Which of the following land tenure systems was introduced by Lord Cornwallis? ऑप्शन रे अछि महलवारी, रयतवारी, जमींदारी, इनामदारी. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी जमींदारी.
Next question 108. Name the tribe which rose in revolt against the British for suppressing the practice of human sacrifice. ଏରେ ଅଛି ନେକ୍ ଦାସ, ଖଣ୍ଡସ, କୁକିଜ, ଓରାଓନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଖଣ୍ଡସ। Next question 109. After the assumption of Diwani, the British East India Company started realizing tribute from India to England in the form of option A ରେ ଅଛି cotton textiles, silver and indigo. Option B ରେ ଅଛି raw silk, cotton textile and indigo. Option C ରେ ଅଛି silver, cotton textiles and indigo. Option D ରେ ଅଛି cotton textiles, silk and tea. यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन बी raw silk, cotton textiles and indigo. Next question 110. Lord Warren Hastings was not associated with option ରେ ଅଛି ରୋହିଲା war, ଚେତ ସିଂ କେସ୍, ଆଫଗାନ war, ନନ୍ଦ କୁମାର କେସ୍। यार ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଫଗାନ war. Next question 111. Who was Governor General when the Great Mutiny of 1857 broke out? Option ରେ ଅଛି ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ, ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ। यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 112. The first Indian university opened in 1857 was in option ରେ ଅଛି ମାଡ୍ରାସ, କଲକତ୍ତା, ବନାରସ, ବମ୍ବେ। यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन बी कलकत्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन 113. The system of budget was introduced in India during the viceroyalty of Dalhousie, Canning, Elgin, Ripon. यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन बी Canning. Next question 114. Who followed the policy of masterly inactivity towards Afghanistan? ऑप्शन ରେ ଅଛି ସାର୍ ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ, ଲର୍ଡ଼ ଲେଲ୍ଟନ୍, ଲର୍ଡ଼ ଆକ୍ୟୁଲାଣ୍ଡ, ସାର୍ ଜନ୍ ନାପିୟର। यार ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାର୍ ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 115. The first census was conducted in India at the time of dash. Lord Dufferin, Lord Lalton, Lord Mayo, Lord Ripon. यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी लॉर्ड मायो. नेक्स्ट क्वेश्चन 116. Who was the head of the committee formed by the government of inquiry into Jallianwala Massacre? ऑप्शन ରେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଡାୟାର, ଜନ୍ ସାଇମନ, ହଣ୍ଟର, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। यार ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହଣ୍ଟର. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 117. When was the monopoly of East India Company in trade brought under the control of the British Crown? ऑप्शन ରେ ଅଛି 1773 AD, 1784 AD, 1793 AD, 1813 AD. यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ए 1773 AD. Next question 118. Who among the following was impeached in England for his actions in India? ऑप्शन ରେ ଅଛି ଲର୍ଡ଼ ୱେଭେଲ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। यार ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 119. Which of the following is not a provision of the Charter Act of 1853? ऑप्शन ए रे अछि under this act
a legislative council for India was created. B ରେ ଅଛି Governor General was given the power to veto the bills passed by legislative council. Option C ରେ ଅଛି a provision was made for an open competitive examination for recruitment to Indian civil services. Option D ରେ ଅଛି none of these. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी none of these. Next question 120. In 1856 the following acts were passed. 1 रे अछि Religious Disabilities Act. 2 रे अछि Abolition of 3 रे अछि Hindu Widows Remarriage Act. 4 रे अछि Doctrine of Lapse. Option A रे अछि 1 and 3. Option B रे अछि 1 and 4. Option C रे अछि 3 and 4. Option D रे अछि 1, 2 and 4. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 1 and 3. Next question 121. Who was known as the liberator of the press? Option A रे अछि Bentinck. Option B रे अछि Hastings. Option C रे अछि Metcalfe. Option D रे अछि Macaulay. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी Metcalfe. Next question 122. Who was responsible for the introduction of English as the official language in India? Option रे अछि Lord William Bentinck, Sir Charles Wood, Marquess of Dalhousie, Alan Octavian Hume. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी Sir Charles Wood. Next question 123. The first Indian Councils Act was passed in 1853, 1857, 1861, 1892. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 1861. Next question 124. What is the correct chronological order in which the following reforms were introduced in India? 1 ରେ ଅଛି Railways. 2 ରେ ଅଛି English Education. 3 ରେ ଅଛି Abolition of Sati. Option A ରେ ଅଛି 1, 2, 3. Option B ରେ ଅଛି 2, 3, 1. Option C ରେ ଅଛି 3, 2, 1. Option D ରେ ଅଛି 1, 3, 2. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 3, 2, 1. Next question 125. The first main British Parliamentary Act regarding East India Company's administration in India was. Option A रे अछि Rowlatt Act. Option B रे अछि Regulating Act. Option C रे अछि Chartered Act of 1913. Option D रे अछि Pitt's India Act. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी Regulating Act. Next question 126. The doctrine of lapse was introduced by. Option रे अछि Lord Wellesley, Warren Hastings, Lord Canning, Lord Dalhousie. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी Lord Dalhousie. Next question 127. The British law which provocated Mahatma Gandhi to crusade for the Asians in South Africa was called. Option रे अछि The Blacks Registration Act, the Asiatic Registration Act, the Colored License Act, the Apartheid Act. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी The Asiatic Registration Act. Next question 128. What was the important provision of the Second Factory Act of 1891? Option A रे अछि Reduction in Working Hours for Men. Option B रे अछि Workmen's Compensation. Option C रे अछि Provision of Weekly Holiday for all workers. Option D रे अछि Regulation of Workers' Wages. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए Reduction in Working Hours for Men. Next question 129. Which of the following are the
3 landmarks of Dalhousie administration. 1 ରେ ଅଛି Indian Railways, 2 ରେ ଅଛି Public Worker Department, 3 ରେ ଅଛି English as a medium of instruction, 4 ରେ ଅଛି Telegraph. Option A ରେ ଅଛି 1, 2 and 3. Option B ରେ ଅଛି 1, 3 and 4. Option C ରେ ଅଛି 2, 3 and 4. Option D ରେ ଅଛି 1, 2, 4. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 1, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 130. Who amongst the following is associated with the Local Self Government Act? ऑप्शन रे अछि कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, डेलहाउसी, रिपन. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी रिपन. नेक्स्ट क्वेश्चन 131. Which of the following was a recommendation? ऑप्शन ए रे अछि gradual withdrawal of state support from higher education. ऑप्शन बी रे अछि women's education. ऑप्शन सी रे अछि new regulation for the organized Senate system. ऑप्शन डी रे अछि introduction of civic education at college and university level. सठिक आंसर होची ऑप्शन ए gradual withdrawal of state support from higher education. Next question 132. Consider the following events. 1 रे अछि Hunter Commission, 2 रे अछि Charles Wood Dispatch, 3 रे अछि Sadler Commission, 4 रे अछि Raleigh Commission. Their correct chronological sequence is ऑप्शन ए रे अछि 3, 2, 1, 4. ऑप्शन बी रे अछि 2, 1, 4, 3. ऑप्शन सी रे अछि 1, 4, 3, 2. ऑप्शन डी रे अछि 4, 3, 2, 1. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 133. Which of the following universities was not established by Lord Canning? ऑप्शन ए रे अछि बॉम्बे, ऑप्शन बी रे अछि दिल्ली, ऑप्शन सी रे अछि मद्रास, ऑप्शन डी रे अछि कलकत्ता. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन 134. The Supreme Court in British India was established under. ऑप्शन रे अछि Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, the Charter Act of 1813, the Charter Act of 1833. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए Regulating Act of 1773. नेक्स्ट क्वेश्चन 135. Who was the first India to become the member of British Parliament? ऑप्शन रे अछि बदरुद्दीन त्याबजी, W.C. बनर्जी, डी वाचा, दादा भाई नारोजी. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी. नेक्स्ट क्वेश्चन 136. Who amongst the following Englishmen was fellow of Gandhiji in South Africa? ऑप्शन रे अछि C.F. Andrews, Pollock, Peterson, none of these. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी Pollock. नेक्स्ट क्वेश्चन 137. Who said good government was never a good suitable for self government? ऑप्शन रे अछि राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी स्वामी दयानंद. नेक्स्ट क्वेश्चन 138. Who said Bengal united is a power, Bengal divided will fall several different ways? ऑप्शन रे अछि डुफ्रिन, कर्जन, हार्डिंग, रिस्ले. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी रिस्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन 139. To which section of population the socio-religious reform movements of the 19th century mainly appealed? 1 रे अछि intellectuals, 2 रे अछि urban upper caste,
3 रे अछि पोर मासेस 4 रे अछि लिबरल प्रिंसेस ऑप्शन ए रे अछि ओनली 1 ऑप्शन बी रे अछि 1 and 2 ऑप्शन सी रे अछि 1 2 and 3 ऑप्शन डी रे अछि 1 2 and 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 1 and 2 नेक्स्ट क्वेश्चन 140 The Vernacular Press Act of 1878 adopted by Lord Lytton intended to option रे अछि help English newspapers, promote freedom of the press, restrain newspapers published in Indian languages, curb freedom of the press in general. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी restrain newspapers published in Indian languages. Next question 141. The earliest public association formed in the history of modern India in 1837 was option A अछि the Landholders Society, the Bengal British Indian Society, the British India Association, the Madras Natives Association. यार सठिक आंसर होची द लैंड होल्डर्स सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन 142. The name of the periodical among the following published by Mahatma Gandhi during his stay in South Africa. ऑप्शन रे अछि नवजीवन, इंडिया गेजेट, आफ्रिकानर, इंडियन ओपिनियन. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन. नेक्स्ट क्वेश्चन 143. Who among the following wrote the book A Nation in the Making? ऑप्शन रे अछि दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन 144. Which British Governor General introduced postage stamps in India? ऑप्शन रे अछि लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड आक्युलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए लॉर्ड डेलहाउसी. नेक्स्ट क्वेश्चन 145. The most important reason for the decline of urban handicapped was ऑप्शन ए रे अछि competition from cheaper machine made goods imported duty free from Britain. ऑप्शन बी रे अछि the railways which help the dealers to distribute machine made goods at the expense of handicrafts. ऑप्शन सी रे अछि monetization of the Indian economy. ऑप्शन डी रे अछि growth of modern industries in India. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए competition from cheaper machine made goods imported duty free from Britain. Next question 146. Which one of the following was the first association to be formed? ऑप्शन रे अछि लैंड होल्डर सोसाइटी, बांगा भाषा प्रादेशिक सभा, बेंगल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. यार सठिक आंसर होची बंग भाषा प्रादेशिक सभा. नेक्स्ट क्वेश्चन 147. मैच द फॉलोइंग. ए रे अछि पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, बी रे अछि क्वीन्स प्रोक्लामेशन ऑफ 1858, सी रे अछि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, डी रे अछि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. 1 रे अछि enable the viceroy to associate Indians with legislative business. 2 रे अछि end of East India Company's rule and India under British Crown. 3 रे अछि centralization of the company under control of the British Parliament. 4 रे अछि gave a legalized constitution to the East India Company's dominion in India.
ऑप्शन ए रे अछि ABCD with 3 2 4 1, ऑप्शन बी रे अछि ABCD with 1 2 3 4, ऑप्शन सी रे अछि 3 4 1 2, ऑप्शन डी रे अछि 4 3 2 1। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए ABCD with 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 मैच द फॉलोइंग। ए रे अछि माप्लास रिबेलियन, बी रे अछि कम्युनल अवार्ड, सी रे अछि जालियानवाला बाग, डी रे अछि डिमांड फॉर पाकिस्तान। 1 रे अछि लॉर्ड MC डोनाल्ड, 2 रे अछि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 3 रे अछि लॉर्ड मिंटो 2, 4 रे अछि लॉर्ड रीडिंग, 5 रे अछि लॉर्ड लिलिंथगो। ऑप्शन ए रे अछि ABCD with 1 2 3 4, ऑप्शन बी रे अछि ABCD with 4 1 2 5, ऑप्शन सी रे अछि ABCD with 4 3 5 2, ऑप्शन डी रे अछि 2 4 5 3। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी ABCD with 4 1 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 which of the following laid the foundation of the British civil service in India? ऑप्शन ए रे अछि वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रे अछि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी रे अछि लॉर्ड वेल्सेली, ऑप्शन डी रे अछि लॉर्ड कैनिंग। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 the system of open competition through examination for entering the civil service was introduced in 1813, 1833, 1853, 1858। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 economic exploitation was most seriously affected by। ऑप्शन ए रे अछि exploitation of India resources for purposes of conquest and wars, बी रे अछि preferential duties, ऑप्शन सी रे अछि employment of British nationals in Indian army stations, ऑप्शन डी रे अछि manipulation of the exchange rate। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी employment of British nationals in Indian army station। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 मैच द फॉलोइंग। ए रे अछि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी रे अछि चार्टर्ड एक्ट 1833, सी रे अछि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी रे अछि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। 1 रे अछि रॉबर्ट क्लाइव, 2 रे विलियम बेंटिक, 3 रे वेल्सेली, 4 रे वारेन हेस्टिंग्स, 5 विलिंगडन। ऑप्शन ए रे अछि ABCD with 1 2 3 4, ऑप्शन बी रे अछि ABCD with 4 2 4 5, ऑप्शन सी रे अछि ABCD with 5 4 3 1, ऑप्शन डी रे अछि ABCD with 3 5 4 1। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी ABCD with 4 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 who was the only governor general or viceroy to be assassinated in India? ए रे अछि लॉर्ड मिंटो 1, बी रे लॉर्ड माउंटबेटन, सी रे लॉर्ड मायो, डी रे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 which of the following states was not annexed by the doctrine of lapse? ऑप्शन रे अछि सातरा, झांसी, नागपुर, त्रावणकोर। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 the subsidiary alliance was aimed at 1 रे अछि protecting the country from Napoleon, 2 रे अछि increasing British revenue, 3 रे अछि increasing British control over the Indian states, 4 रे अछि taking away the powers of local rulers। ऑप्शन ए रे अछि 3 and 4, ऑप्शन बी रे अछि 1 2 and 3,
ऑप्शन सी रे अछि 2 3 एंड 4 ऑप्शन डी रे अछि 1 3 एंड 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी 1 3 and 4 next question 156 arrange the following governors general chronologically 1 रे लॉर्ड कैनिंग 2 रे लॉर्ड हार्डिंग 1 3 रे लॉर्ड एलन वरफ 4 रे लॉर्ड आक्युलैंड 5 रे लॉर्ड मैटकेफ ऑप्शन ए रे अछि 5 3 4 2 1 ऑप्शन बी रे अछि 5 4 3 2 1 ऑप्शन सी रे अछि 4 5 1 2 3 ऑप्शन डी रे अछि 4 3 2 5 1 next question 157 the major recommendation of the Woods dispatch in 1854 OR 1 रे अछि creation of a department of public instruction in each of the 5 provinces of the company's territory 2 रे अछि establishment of universities at Kolkata, Bombay, Madras 3 रे अछि establishment of a network of graded schools, high schools, middle schools and the elementary schools 4 रे अछि promotion of English education and discouragement of vernacular schools ऑप्शन ए रे अछि 1 2 3 and 4 ऑप्शन बी रे अछि 1 2 and 4 ऑप्शन सी रे अछि 1 2 and 3 ऑप्शन डी रे अछि 2 3 and 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 1 2 and 3 नेक्स्ट क्वेश्चन 158 in the indigenous system of education in the late 18th and early 19th century India 1 रे अछि schools were generally run with the help of contribution from zamindars of local rich men 2 रे अछि main emphasis was on teaching classical languages 3 रे अछि women were generally debarred from formal education system ऑप्शन 4 रे अछि Centers for higher learning are basically the domain of upper caste. Option A रे अछि 1 2 3 and 4 ऑप्शन बी रे अछि 1 2 and 4 ऑप्शन सी रे अछि 2 and 4 ऑप्शन डी रे अछि 2 3 and 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 1 2 3 and 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 159 Which of the following statements are true regarding the permanent settlement? 1 रे अछि The system was introduced in 1793 by Lord Warren Hastings. 2 रे अछि Under the system, zamindars are vested with proprietary rights over the land and are made responsible for the collection of land revenue. Option 3 रे अछि They were allowed to keep 1/4 of the share and had to give the rest to the English company within a specified time. 4 रे अछि The rent for the land to be realized by the landlords from the cultivator was left unsettled. ऑप्शन ए रे अछि 2 and 4 ऑप्शन बी रे अछि 1 and 4 ऑप्शन सी रे अछि 1 2 and 3 ऑप्शन डी रे अछि 2 and 3 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 2 and 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 160 Which of the following are associated with Lord Lytton 1 रे अछि Rowlatt Act 2 रे अछि The Arms Act 3 रे अछि The Vernacular Press Act 4 रे अछि Abolition of duties on the import of cotton goods ऑप्शन ए रे अछि 1 2 and 3 ऑप्शन बी रे अछि 2 3 and 4 ऑप्शन सी रे अछि 1 3 and 4 ऑप्शन डी रे अछि 1 2 and 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 2 3 and 4 नेक्स्ट क्वेश्चन 161 Peasants lost their rights over the land cultivated them due to
the Mahalwari settlement, the permanent settlement, the Royatwari settlement, none of the above. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी द परमानेंट सेटलमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 162 मैच द फॉलोइंग. रेवेन्यू पॉलिसी ए रे अछि परमानेंट सेटलमेंट, बी रे अछि रयतवारी सेटलमेंट, सी रे अछि महलवारी सेटलमेंट, डी रे अछि जप्ती सिस्टम. एरिया ऑफ ऑपरेशन 1 रे अछि बेंगल, बिहार एंड ओडिशा, 2 रे अछि पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, 3 रे अछि बॉम्बे एंड सिंध, 4 रे अछि गुजरात. ऑप्शन ए रे अछि ABCD with 2 4 1 3, ऑप्शन बी रे अछि ABCD with 1 3 2 4, ऑप्शन सी रे अछि ABCD with 2 3 1 4, ऑप्शन डी रे अछि ABCD with 1 4 2 3. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी ABCD with 1 3 2 4. Next question 163 which one of the following was the Magna Carta of Western educational system in India? ऑप्शन ए रे अछि द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ऑप्शन बी रे अछि द कैरेक्टर एक्ट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन सी रे अछि डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1854, ऑप्शन डी रे अछि द रिपोर्ट ऑफ द हंटर कमिशन. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1854. नेक्स्ट क्वेश्चन 164 मैच द फॉलोइंग. ए रे अछि पार्टीशन ऑफ बेंगल, बी रे अछि डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल, सी रे अछि सोशल रिफॉर्म्स, डी रे अछि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. 1 रे अछि लॉर्ड रिपन, 2 रे रॉबर्ट क्लाइव, 3 रे वारेन हेस्टिंग्स, 4 रे लॉर्ड कर्जन, 5 रे लॉर्ड विलियम बेंटिक. ऑप्शन ए रे अछि ABCD with 4 1 5 2, ऑप्शन बी रे अछि ABCD with 5 2 3 1, ऑप्शन सी रे अछि 4 2 5 1, ऑप्शन डी रे अछि 5 1 3 2. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 4 2 5 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 165 which one of the following pairs is not correctly matched? ऑप्शन ए रे अछि पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रे अछि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेलहाउसी, ऑप्शन सी रे अछि वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट कर्जन, ऑप्शन डी रे अछि आइबटविल रिपन. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट कर्जन. नेक्स्ट नंबर 166 कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस. 1 रे अछि झांसी, 2 रे संबलपुर, 3 रे सतरा. द करेक्ट chronological order in which they were annexed by the British is. ऑप्शन ए रे अछि 1 2 3, बी रे अछि 1 3 2, सी रे अछि 3 2 1, डी रे अछि 3 1 2. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 3 2 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 167 which one of the following Indian leaders was dismissed by British from the Indian civil services? ऑप्शन डे अछि सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त, सुभाष चंद्र बोस. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन 168 there was no independent development of industries in India during British rule because of the option डे अछि absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of the rich to invest in land. सठिक आंसर होची ऑप्शन डी प्रिफरेंस of the rich to invest in land. Next question 169 the term imperial preference was applied to the. ऑप्शन ए रे अछि special privileges
on British imports in India. Option B ରେ ଅଛି racial discrimination by the Britishers. Option C ରେ ଅଛି subordination of Indian interest to that of the British. Option D ରେ ଅଛି performance given to British political agents over Indian princess. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 170. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ थग्स. ऑप्शन ए रे अछि जनरल हेरी प्रेंडरगेस्ट, कैप्टेन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बोन्स, कैप्टेन रॉबर्ट एम्बर्टन. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी कैप्टेन स्लीमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन 171. Arrange the following in chronological order who administrated as Governor General as India. 1 ରେ ଅଛି ୱେଲସଲି, 2 ରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, 3 ରେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍, 4 ରେ ଡେଲହାଉସି. ऑप्शन ए रे अछि 3214, ऑप्शन बी रे अछि 1243, ऑप्शन सी रे अछि 4231, ऑप्शन डी रे अछि 4123. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 3214. नेक्स्ट क्वेश्चन 172. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was that he. ऑप्शन ए रे अछि brought the problems of the Indians to the notice of the British. ऑप्शन बी रे अछि exposed the economic exploitation of India by the British. ऑप्शन सी रे अछि interpreted the ancient Indian text and restored the self-confidence of Indians. डी रे अछि stressed the need for eradication of all the social evils before anything else. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी expose the economic exploitation of India by the British. Next question 173. Where did Mahatma Gandhi fast by the weapon of satyagraha? ऑप्शन रे अछि साउथ अफ्रीका, चंपारण, बरदली, दांडी. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन 174. रयतवारी वाज स्टार्टेड बाय. ऑप्शन रे अछि वेल्सली, हेस्टिंग्स, मुनरो, डेलहाउसी. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी मुनरो. नेक्स्ट क्वेश्चन 175. ड्यूरिंग whose viceroyalty Queen Victoria was crowned with Kaisar-e-Hind in Delhi दरबार. ऑप्शन रे अछि हेस्टिंग्स, लेल्टन, इल्जिन, लॉर्ड मिंटो. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी लिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन 176. Which reformer from Maharashtra was known as लखिताबादी. ऑप्शन रे अछि पंडित रामाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, गोपाल हरी देशमुख. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी गोपाल हरी देशमुख. नेक्स्ट क्वेश्चन 177. Which one of the following pairs is correctly matched? ऑप्शन ए रे अछि सुरेंद्रनाथ बनर्जी होम रूल मूवमेंट. ऑप्शन बी रे अछि लाला हरदयाल organize an army in Europe for Indians freedom. ऑप्शन सी रे अछि राजा राधाकांत देव opposed the abolition of the practice of sati. ऑप्शन डी रे अछि साइद अहमद खान फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी राजा राधाकांत देव opposed the abolition of the practice of sati. Next question 178. Match the following. ए रे अछि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी रे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सी रे इंडियन सोसाइटी, डी रे इंडियन एसोसिएशन. 1 रे अछि विलियम आदाम, 2 रे अछि देवेंद्रनाथ टैगोर, 3 रे
Anand Mohan Bose, for S.N. Banerjee and A.M. Bose. Option A रे अछि ABCD with 1 2 3 4. Option B रे अछि ABCD with 2 3 4 1. Option C रे अछि ABCD with 3 4 1 2. Option D रे अछि ABCD with 4 3 1 2. सठिक आंसर होची ऑप्शन ए ABCD with 1 2 3 4. Next question 179. The 19th century reawakening in India was confined to the option रे अछि priestly class, B रे अछि upper middle class, C रे अछि rich peasantry, D रे अछि urban landlords. सठिक आंसर होची ऑप्शन बी upper middle class. Next question 180. Which of the following help to develop close ties between the government and masses? Option रे अछि महलवारी सेटलमेंट, रैतवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ऑल ऑफ द एबव. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी रैतवारी सेटलमेंट. Next question 181. The leader to have the unique distinction of firing the first shot in the rebellion of 1857 was. Option रे अछि तांतिया टोपे, भक्ति खान, मंगल पांडे, none of these. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी मंगल पांडे. Next question 182. The Sipai revolted openly in 1857 at. Option रे अछि मीरठ, कानपुर, बरहमपुर, बाराकपुर. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए मीरठ. Next question 183. Who was known by the sobriquet of Mahakpuri during the 1857 revolt? ऑप्शन रे अछि रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल, हजरत महल, none of these. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी जीनत महल. Next question 184. Consider the following statements associated with the Great Uprising of 1557. 1 रे अछि it was an organized revolt against the British. 2 रे अछि in this uprising both Hindus and Muslims joined hands against the British. 3 रे अछि it was a conspiracy to restore supremacy of native rulers of India. Of these, A रे अछि 1 2 and 3 are correct. B रे अछि 1 and 2 are correct. C रे अछि 2 and 3 are correct. 4 रे अछि 1 and 3 are correct. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 2 and 3 are correct. Next question 185. The real name of तांतिया टोपे was. ऑप्शन रे अछि G.K. गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंगा. सठिक आंसर होची ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंगा. Next question 186. Who was the British PM at the time of revolt of 1857? ऑप्शन रे अछि चर्चिल, पाल्मरस्टन, अटली, कल्पी. यार सठिक आंसर होची 186 बी पाल्मरस्टन. Next question 187. Rani Lakshmibai died fighting the British in the Battle of Dash. ऑप्शन रे अछि कानपुर, ग्वालियर, झांसी, काल्फी. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी काल्फी. Next question 188. Which of the following classes did not participate in the revolt of 1857? 1 रे agricultural laborers, 2 रे money lenders, 3 रे peasants, 4 रे जमींदार्स. ऑप्शन रे अछि 1 only, 1 and 3, 2 only, 2 and 4. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 1 and 3. Next question 189.
Which one of the following cannot be considered as the major causes of the failure of the revolt of 1857? Option A रे अछि the revolt did not spread to all parts of India but was localized to Indo-Gangetic plains and part of central India. Option B रे अछि rulers of India states and domindars of Bihar and Bengal sided with the Britishers. C रे अछि rebels had no higher ideal before them except anti-British sentiments. D ରେ ଅଛି revolt was well planned but had no national leadership. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी rebels had no higher ideal before them except anti-British sentiments. एहीपरि भिडियो देखिबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं या पूर्वरु जो भिडियो गुडिको होईची ताहाको मध्य देखि परिबो आउ एही भिडियोटी तुमको जदि भल लागिथिबो ताले लाइक करी सांग मानको सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू।